Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. In this video, we are going to discuss some of the basic concepts that will be used in the line balancing problem. So let me start with the presentation. So basically, we will analyze the assembly lines. And in production automation course, that analysis is only with reference to single model assembly lines. Single model assembly line means that the assembly line will be dedicated only for the assembling of one type of product. मतलब ये है कि जो बैच प्रोडक्शन का सिनेरियो होता है वो नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। मास प्रोडक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है नॉर्मली, और हमारे कोर्स कंटेंट्स जो है with reference to the analysis is dedicated to single model assembly lines. Single model assembly line means mass production में जो products आपके assemble होते हैं. Our objective to analyze a system, any system, whether it is a production system or assembly system. So we try to analyze the performance measures. What is the demand rate from the market, and what will be the output of a system which will be designed to achieve that desired production rate. So as far as the assembly lines are concerned, so we must design an assembly line in such a way so that it will fulfill the requirement of the market. Whatever is the demand, the assembly line must be able to achieve that particular demand in some specific time period, and that will depend upon the production rate of the system. So normally ये जो production rate होता है, it is output of the system, and output of any system is normally called as an efficiency. And efficiency of manufacturing system or assembly system is the total number of product that will be produced by that particular system, which is technically known as production rate. So production rate is nothing, it is the manufacturing efficiency of the manufacturing system. So the assembly line must be designed to achieve a desired production rate that will be sufficient to satisfy the demand. So if you look into the scenario, so the demand rate that is totally dependent upon the production rate of the system. And production rate is theoretically, if you want to define it, so it is the total number of units that will be produced by a system. और प्रोडक्शन रेट को जब आप देखते हैं तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइकिल टाइम ऑफ द सिस्टम. एंड साइकिल टाइम that was discussed in the previous video, that it is the time in which a system will complete one particular type of product. So it is basically the cycle time which need to be calculated accordingly to the demand rates. So प्रोडक्शन रेट और साइकिल टाइम को आपस में आपने फिर रिलेट करना होगा. एंड इन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियोज ये फार्मूलेशन जो है दे आर नॉट स्टैंडर्ड फार्मूलाज. बहुत कम आपको बुक्स में स्टैंडर्ड फार्मूलाज मिलेंगे. These formulas normally have variations in themselves, and those variations depend upon the scenario के current scenario क्या है, and accordingly you will have to adjust the formulation for
that particular case. So प्रोडक्शन रेट और साइकिल रेट को जब आप रिलेट करते हैं आपस में, so there is basically an inverse relation between them. Production rate means the total number of units produced per unit time. Rate जो है यानी per time, and that per unit time can be second, it can be minute, it can be an hour. जो स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया जाता है सिस्टम्स में, दैट इज़ आवरली प्रोडक्शन रेट। सो जो प्रोडक्शन रेट हम कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी पर यूनिट टाइम, एंड दैट पर यूनिट टाइम विल बी पर 1 आवर, ठीक है ना। सो दिस मीन्स दैट 60 मिनट्स। एंड नॉर्मली जो मशीनिंग टाइम्स है, they will be given in minutes. So you have to convert that to a production rate, और उसको आप फिर hours के रेफरेंस से कैलकुलेट करेंगे। समटाइम्स सेकंड्स में भी ये अवेलेबल होगा जो डिज़ायर्ड मशीनिंग टाइम्स हैं, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट टू आवरली प्रोडक्शन रेट। सो per unit time means that total number of units divided by the available time, and available time is the cycle time, you know. So R, which is normally denoted by RP, production rate, you know. So RP will always be equal to 1 divided by that available time, and cycle time जो है वो आपका अवेलेबल टाइम है, सो दैट साइकिल टाइम इज नॉर्मली डिनोटेड बाय टी विद अ प्रीफिक्स सी, ठीक है ना। एंड प्रोडक्शन रेट इज आर विद अ प्रीफिक्स पी। सो एनुअल डिमांड जो है इट इज़ डिनोटेड बाय डी ए, सो इट मस्ट बी रिड्यूस टू एन आवरली प्रोडक्शन रेट, ठीक है ना। सो आपके पास डिमांड रेट होगा, you have to convert that demand rate to basically you will have to represent that demand rate in production rate scenario, और production rate को find करने के लिए you will have to calculate the cycle times. So in most of the problems that cycle time will be given, otherwise you will find that. So production rate will always be equal to 1 divided by cycle time. So if in a problem the cycle time is given, so you can easily find the production rate. If the production rate of the system is given, from that you will find the cycle time. Okay. So production rate is output of the system, and output of the system, as you know, is the efficiency of the system. You know, so normally efficiency को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सो एफिशिएंसी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज द प्रोडक्शन रेट। सो आर पी इज द एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट is the total number of units that will be produced by that particular system. In that case, output is the annual demand. यानी annual demand जितनी भी होगी, जितने भी desired number of units आपने बनाने होंगे, so that will be the output. So आपका output इस केस में D with the prefix A है, और DA जो है वो आपका annual demand है, divided by input. Input in case of manufacturing system is the available time. यानी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपने बनाने होंगे उसके लिए आपके पास सिर्फ टाइम ही है कि कितने टाइम में आप बनाएंगे। सो द टोटल अवेलेबल टाइम टू कंप्लीट और टू प्रोड्यूस दोज डिजायर्ड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी द इनपुट टू दैट सिस्टम। सो नॉर्मली जो प्रोडक्शन रेट्स हैं they are calculated yearly on the yearly basis.
सो ये पर मंथ भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, but normally when we design a system, so we calculate those performance measures with reference to yearly production rate, you know. So पर ईयर जब आप फिर कैलकुलेट करते हैं अवेलेबल टाइम, सो अगेन यू विल हैव टू start with the total number of hours that will be available per day, ठीक है ना. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एस डब्ल्यू जो है वो नंबर ऑफ शिफ्ट्स पर वीक रिप्रेजेंट कर रहा है. एच विद द प्रेफिक्स एस एच जो है it represent the number of hours per shift, and O with the prefix W represents the total number of operational weeks. कि कितने हफ्ते के लिए जो है वो प्रोडक्शन होगी, how many days will be there in a week. 6 days operational है, 5 days है या 7 days हैं, that will depend on the system, ठीक है ना, and this data will be given, ठीक है ना. Then number of shifts per day, कितने shifts होंगे, 1 shift है, single shift है, 2 shifts है, या 24 hours के लिए जो है आपकी फैक्ट्री चल रही है तो 3 shifts होंगे. And then you have total number of hours per shift, कि अगर एक शिफ्ट है तो कितने आवर्स की शिफ्ट होगी, 5 आवर्स की होगी या 6 आवर्स की होगी या 8 आवर्स की होगी. तो नॉर्मली 8 आवर्स की शिफ्ट होती है. अगर 3 शिफ्ट आप देखते हैं 24 आवर्स में, तो दैट डेटा विल बी गिवन टू यू, ठीक है ना. सो फ्रॉम दैट you will then find the desired production rate of the system, you know. So production rate, as I told you, that it is the efficiency of the system, and efficiency is output by input. Output in our case will be demand rate. Total demand कितनी है, the total number of units produced divided by the available time to produce those units, you know. So बास प्रॉब्लम्स में आपको शिफ्ट्स गिवन होंगे और वीक्स गिवन होंगी, ठीक है ना. बाज़ में डेज गिवन होंगी, बाज़ में जो है वो आवर्स गिवन होंगे. सो यू हैव टू रीफ्रेज दिस फार्मूला फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है ना. थीम यही होगा आपका कि इट विल ऑलवेज बी equal to the total number of units divided by the available time, and whatever is that available time, you will have to think on that within the problem statement. Let me complete this slide and then we will discuss. So we have to convert the production rate to the cycle time, ठीक है ना. और प्रोडक्शन रेट साइकिल टाइम का मैंने आपको बताया कि इनवर्स रिलेशन है. सो आर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/t. So t is 1/r या r is 1/t, ठीक है ना. And when we talk about cycle time and production rate, so that r will be rp and cycle time will be t with a prefix c. In actual scenario, some of the production time will definitely be lost due to equipment failures, power outages हो सकती हैं, material unavailability हो सकती है, unseen circumstances जो है उसकी वजह से you will never get the full available time जो कि theoretically आपने calculate किया होगा, ठीक है ना. लेबर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है ना, which will directly affect that required production rate जो आपने theoretically डिज़ाइन किया होगा. एंड नॉर्मली उसको हम लाइन लॉसेस कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना. सो कीपिंग दोज line losses in consideration, we will actually be left with the actual line efficiency, which will be less than the theoretical efficiency or ideal efficiency that you will calculate. इसको लाइन एफिशिएंसी भी कहते हैं, इसको अप टाइम प्रोपोर्शन भी कहते हैं,
लाइन लॉसेस भी कहा जाता है। सो लाइन एफिशिएंसी ये है कि you will be left with a certain proportion of the time within a shift. Uh, and you will have to take those losses in consideration. जो actual efficiency आपके पास आएगी, which is the line efficiency. Line efficiency is normally denoted by E, और उस फैक्टर को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने प्रोडक्शन रेट या साइकिल टाइम जो भी आपका डिज़ायर्ड पैरामीटर होगा, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आर पी इज़ 1/TC, सो नॉर्मली जो साइकिल टाइम होगा दैट विल बी गिवन इन मिनट्स. So if it is given in minutes, so you will have to uh, convert it to hourly production rate. सो साइकिल टाइम को फिर आपने 60 पे डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। सो इन दैट केस आर पी विल बी इक्वल टू 1/बाय टी सी डिवाइडेड बाय 60. सो 60 आपका ऊपर चला जाएगा. सो यू विल बी लेफ्ट विद द फिगर 60 डिवाइडेड बाय आर पी या 60 डिवाइडेड बाय टी सी, अगर आप टी सी या आर पी को इधर या उधर करते हैं, ठीक है ना. सो आर पी विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय टी सी, या टी सी विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय आर पी. इफ़ इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट द लाइन एफिशिएंसी इज़ गिवन, बास प्रॉब्लम्स में ये गिवन बताया गया होगा आपको कि लाइन लॉसेस जो है दे आर देयर एंड यू विल हैव टू, फॉर एग्जांपल 94% जो है वो लाइन एफिशिएंसी है. सो यू विल देन हैव टू मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्शन रेट और साइकिल टाइम विद that 94% efficiency, which will be 0.94. So your actual production rate will be 60 divided by TC into 0.94, ठीक है ना. And that will definitely be then less than the ideal cycle rate. So ideal cycle rate normally आपका अगर यानी प्रोडक्शन रेट कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज़ 1/बाय द अवेलेबल टाइम, ठीक है ना, विच इज़ द साइकिल टाइम. और साइकिल टाइम जो है वो यूजुअली मिनट्स में होता है. सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 60. 60 आपका ऊपर चला जाएगा. सो आर सी विल बी 60 बाय टी सी, and actual cycle time that will be available uh, uh, keeping the line efficiencies in consideration. So then definitely you will have to multiply that factor with the ideal cycle rate, you know. So आपका ideal cycle rate जो होगा, this is your target, and basically this will be your actual performance of the system. So production rate RP is normally converted to the cycle time TC, you know, accounting for the line efficiency. So you must take this factor in mind. RC जो है वो आपका ideal cycle rate है for the line, and जो cycle rate है basically it should always be less than the actual cycle rate. So actual cycle rate जो है वो आपका बढ़ जाएगा और production rate जो है वो आपकी कम हो जाएगी. So ideal cycle rate must be less than the required production rate. लाइन एफिशिएंसी की जब आप बात करते हैं, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया अप टाइम प्रोपोर्शन जिसे आप कहते हैं. सो efficiency is again output divided by input. So output in our case is the actual production, which is denoted by RP, and input is sorry is the RC, you know, which is the ideal cycle rate. So EC अगर लाइन एफिशिएंसी आपने फाइंड करनी है तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय दिस फार्मूला RP divided by RC. So
एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल प्रोडक्शन। इसको अगर आप साइकिल टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो आर पी विल बी 1/T p, और आर सी जो है वो आपका 1/Tc हो जाएगा, है ना। सो टी सी विल कम टू द अपर साइड और टी पी जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन रेट्स, इन टर्म्स ऑफ द साइकिल टाइम्स, यू कैन फाइंड द line efficiency. TP, as I said, it is average production cycle time. So 60 divided by RP. Here, one of the performance measures that you will find is the total number of workers. Total number of workers means total number of workstations, because initially when we design a system, so we consider one worker per station. So अगर number of workers for example आपके पास 10 है, so this means that there will be 10 workstations in that particular system. So to find the number of workers, again you will formulate your problem yourself. नॉर्मली नंबर ऑफ वर्क स्टेशन या नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि यू हैव द वर्क लोड दैट विल बी कंप्लीटेड इन सम गिवन टाइम, ठीक है ना। जो जो भी डिज़ायर्ड टाइम होगा दैट विल बी गिवन, एंड देन यू विल हैव द अवेलेबल टाइम टू कंप्लीट दैट टोटल वर्क लोड, ठीक है ना। वर्क लोड मीन्स द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट विल बी इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस और इन एन असेंबली ऑपरेशन, ठीक है ना। अगर असेंबली प्लांट है तो उस केस में वो असेंबली ऑपरेशंस होंगी। सो द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, इसको सिंपली अगर आपके पास जो अवेलेबल टाइम है उसके उस पर डिवाइड कर दें, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स के। अगर इतना वर्क लोड है और इतना आपके पास टाइम है तो इतने वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है ना। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो आपके पास यानी ऑपरेशन टाइम जो है टोटल वर्क लोड का फॉर एग्ज़ाम्पल 60 है, या लेट अस से 30 मिनट्स है, और अवेलेबल टाइम जो है वो 60 मिनट्स है, तो उसको आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क लोड जो है वो आपके पास 60 है और अवेलेबल टाइम जो है वो 5 मिनट्स है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। सो सिंपली नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस अगर आपने फाइंड करने हो तो यू कैन यूज़ दिस सिंपल फार्मूला दैट द टोटल वर्कलोड विल बी गिवन टू यू। अवेलेबल टाइम जो है यानी अवेलेबल टाइम इज़ दैट साइकिल टाइम, ठीक है ना। जो भी डिज़ायर्ड साइकिल टाइम आपका आता है उसको सिंपली वर्कलोड और जो साइकिल टाइम है उसका रेशो लेके आपके पास इजीली जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो आ जाएंगे। वर्क लोड टू बी अकम्प्लिश्ड, ये वर्क लोड कहाँ से आएगा। ये वर्क लोड अगर आपके पास लड़ा से प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन अगेन फाइंड इट थ्रू दिस सिंपल फार्मूलेशन कि टी विद अ प्रीफिक्स डब्ल्यू सी जो है उसको वर्क कंटेंट टाइम कहा जाता है। वर्क कंटेंट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन वन कंप्लीटेड प्रोडक्ट, एंड वर्क कंटेंट की बात हो रही है। और अगर वर्क कंटेंट टाइम की बात आप करते हैं सो इट विल बी द टोटल time that will be required to complete all of those operations. So you have that total time, individual operation के जितने भी times हैं वो आप sum up कर लेंगे, you will get TWC, and if you multiply that work content time with the desired production rate तो आपके पास total workload आ जाएगा। यानी production rate आपके पास जितनी भी है, कितने यूनिट्स आप बना रहे हैं पर यूनिट टाइम, एंड देन इफ़ यू
multiply those number of units with the total operational time, so you will get the total workload. Total workload means कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिट पे आपका जो है वो 30 मिनट्स टाइम लगता है, तो अगर आपने 10 यूनिट्स बनाने हो, असेंबल करने हो, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो सिंपल फार्मूलेशन है 10 मल्टीप्लाइडेड बाय 30 मिनट्स, आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा कि ये आपका वर्कलोड है। और अवेलेबल टाइम जो है इट इज़ दैट साइकिल टाइम, एंड साइकिल टाइम एज आई सेड दैट इट इज़ गिवन इन मिनट्स, सो यू विल हैव टू कैलकुलेट कन्वर्ट इट टू आवर। और फिर अगर लाइन एफिशिएंसीज गिवन हो तो उस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। सो वर्क कंटेंट टाइम, it is given over here the total time of all the work elements, ठीक है ना। so you have to differentiate between those terms. work content जो है total number of operations है, वर्क कंटेंट टाइम जो है इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल दोज ऑपरेशंस। और फिर आपके पास एक है वर्क एलिमेंट। वर्क एलिमेंट इज़ इंडिविजुअल ऑपरेशन, यानी फॉर एग्जांपल आपने ड्रिलिंग का ऑपरेशन करना है, सो दैट ड्रिलिंग ऑपरेशन इज़ अ वर्क एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आपने थ्रेड कटिंग का ऑपरेशन करना है, दैट थ्रेड कटिंग ऑपरेशन इज़ अ वर्क एलिमेंट। सो वर्क एलिमेंट और वर्क कंटेंट जो है इसको अगर आप रिलेट करते हैं तो वर्क कंटेंट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द वर्क एलिमेंट्स, यानी टोटल ऑपरेशनल टाइम जो भी होगा वो जितने भी आपके पास इंडिविजुअल ऑपरेशन होंगे उन सब का टाइम अगर आप सम अप करते हैं तो यू विल गेट द वर्क कंटेंट टाइम। So the theoretical minimum number of stations that will be required to come up with the desired production rate, that will be equal to, यानी जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं या नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस हैं, नॉर्मली उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क कंटेंट टाइम, यानी आपके पास जो डिज़ायर्ड टाइम है, जितना टाइम आप का रिक्वायर्ड है और जो आपके पास अवेलेबल टाइम है, ठीक है ना। सो इट इज़ रेशो ऑफ दीज टू टाइम्स। सो टोटल वर्क कंटेंट टाइम को आप साइकिल टाइम पे जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस और ऑपरेशंस। मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 60 मिनट्स हैं, लेट अस से टोटल ऑपरेशन आपने जो करने हो, चाहे वो 10 ऑपरेशंस हो या 15 ऑपरेशंस हो, इफ़ द कलेक्टिव टाइम ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस इज़ लेट अस से 60 मिनट्स, और साइकिल टाइम जो है वो आपका लेट अस से 10 मिनट्स है या 6 मिनट्स है, 10 मिनट्स ले आप आसानी लेंगे। सो 60 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 10, ठीक है ना। या अगर आप 10 लेते हैं तो 60 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 6। सो दिस मीन्स दैट यू विल at least require 6 workers to complete those operation if the cycle time is 10 minutes, because you will have to complete a product in that particular 10 minutes. Cycle time मैंने आपको बताया था कि it is the time interval basically in between two consecutive products that will come out of the system. So after अगर cycle time 10 minute है तो it means that you will get a new product of the system each 10 minutes. So नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो आपके पास अगर आप देखते हैं तो ये टोटल वर्क कंटेंट टाइम जो है दिस इज़ बेसिकली द टोटल वर्कलोड विच इज़ WL। इस स्लाइड में अगर आप देखें, सो दैट इज़ वर्कलोड डिवाइडेड बाय द अवेलेबल टाइम। वर्कलोड जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द टाइम। अवेलेबल टाइम इज़ अ टाइम, सो टाइम रेशो जब आप लेंगे सो इट कम्स आउट टू बी TWC डिवाइडेड बाय
TC, यानी total work content time divided by the cycle time. और total work content time क्या है? It is the total workload. Cycle time क्या है? It is the available time. And if you put in the values of TWC and TC, so workload, again I will go back to the previous slide. वर्कलोड जो है वो आपका इक्वल है, यानी जो आपकी डिज़ायर्ड प्रोडक्शन रेट है, इफ़ यू मल्टीप्लाई दैट रेट विद द टोटल कंटेंट टाइम, जो आपका वर्क कंटेंट टाइम है या वर्कलोड है, तो यू विल get the total workload. So W equals to workload divided by available time. Workload equals to RP into TWC, और available time जो है वो आपके पास 60 इंटू ई है. अगर आप यूनिट टाइम, यानी अगर आप 1 मिनट लेते हैं तो 1 मिनट मीन्स 60 ई. अगर 2 मिनट्स है तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 है तो वो फिर आपका जो भी फिगर आएगा, सो यू विल हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर फिगर, एंड ई इज़ फॉर द एफिशिएंसी, लाइन एफिशिएंसी. TWC जो है वो वर्क कंटेंट टाइम है, इट विल बी इन मिनट, ठीक है ना. और TC जो है वो आपका साइकिल टाइम है. साइकिल टाइम मीन्स यानी टोटल अवेलेबल टाइम पर स्टेशन. As I said कि for example अगर 10 minutes है, so every workstation will have 10 minutes of time, and within that 10 minutes they have to complete their desired operations. And normally during the initial stages we assume one worker per station, so it will be the minimum number of workers. और यहाँ पे जो फार्मूलेशन में आपका है कि मिनिमम इंटीजर जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू दिस वैल्यू. सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क कंटेंट और जो अवेलेबल टाइम है वो फिगर्स आप फार्मूले में डालते हैं, and you get some round figure, well and good. For example अगर जिस तरह मैंने कहा कि 60 मिनट्स है और अवेलेबल टाइम अगर 10 मिनट्स है तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना. सो 6 मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी 6, ठीक है ना. सो इट विल बी इक्वल टू 6. लेट अस से कोई रेशो में आता है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ 6.1 और 6.2 और 6.3, सो देन यू विल हैव टू जंप टू द नेक्स्ट हायर फिगर. अगर 6.01 भी आपका आता है, तो दिस मीन्स दैट यू विल हैव टू टेक 7 वर्कर्स. अगर 6.1 है तो भी 7 वर्कर होगा, अगर 6.8 है तो भी 7 वर्कर होगा, 6.5 है तो भी 7 वर्कर होंगे, बिकॉज यू कैन नॉट डिक्रीज दैट वैल्यू. अगर आपके पास 6.3 आ रहा है एंड यू टेक 6 वर्क स्टेशन, सो दिस मीन्स दैट 0.3 मिनट्स का या 0.3 यूनिट्स का जो फ़र्क आ रहा है वो इंक्रीज़ होगा साइकिल टाइम में. एंड इफ़ यू इंक्रीज द साइकिल टाइम, दिस मीन्स दैट यू विल बी डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन रेट. तो जब आपका प्रोडक्शन रेट डिक्रीज़ होगा तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जो डिमांड रेट है वो आप कंप्लीट नहीं कर सकेंगे. सो दैट इज़ वाई you will always go for the next higher figure if it is in ratio. Ratio means points में अगर आता है आपका. So theoretical minimum जो है, why it is not possible? One is the line efficiency, कि line efficiencies आ सकती हैं, line losses आ सकती हैं, you know. And if the line losses are not there, for example, so repositioning losses will be there. For sure they will be there. So repositioning losses means कि जब वर्क पीस आएगा एक वर्क स्टेशन पे, so you will have to load that work pieces onto the workstation. The worker will reposition himself, ठीक है ना. So जो वर्क पीस की हैंडलिंग है, यानी वर्क पीस लोड करना अनलोड करना, those times will be different
for the different workstations. या अगर वर्कर जो है वो रिपोजिशनिंग होती है जो लास्ट वीडियो में, इफ़ यू रिमेंबर, सो आई टोल्ड यू दैट जो पेसिंग है, एक तो रिजिड पेसिंग होती है, एक जो है पेसिंग विद मार्जिन होती है. सो पेसिंग विद मार्जिन इज़ अ सिनेरियो इन विच द worker basically moves along the product and he performs the operations. और जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो the worker has to go back to the start point of his designated area. You know, so this is repositioning of the worker, and loading and unloading of the work pieces on the machines, on the workstations from the conveyor belt. This is repositioning of the work pieces. So repositioning losses जो है वो होंगी. Each worker will have a different repositioning time. So so some of the time will be lost at each station for each cycle due to the repositioning of the worker or the work unit. So thus the workers will not have the exact amount of time, available time you can say, which is the cycle time, TC. पूरा जो for example if it is TC is 1 minute, so the whole 1 minute will not be available for the worker. Some of the time will be lost in the repositioning. And this is why we go for the line balancing techniques. लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम जो है वो imperfect balance के लिए ही आप करते हैं, and it is not possible to basically divide the work content time evenly among the workers. Work content time means the total operation time. जितने operations आपने perform करने होंगे, so it is always impossible to distribute those operations among the workers evenly. And there will be some workers who will have uh, the available time which will be less than the actual cycle time. So उसको आप repositioning losses कहते हैं. Repositioning losses occur on a production line because some time will be required for each cycle to reposition the worker or the work unit, or maybe both. So like I said that on a continuous transport line, time will be required for the worker to walk from the unit just he has completed, and he will go back to the start point of his designated area. And in conveyor systems, mostly you will need some time to remove the work units from the conveyor and then position it onto the workstation. So if repositioning losses are there, if they are mentioned in the problem, so repositioning times are normally denoted by capital T with the prefix R. So TR is the repositioning time. So repositioning time, again, it is the time that will be available for each cycle for the worker to position himself or the workpiece. So if repositioning times are there, अगर repositioning losses जो है वो है problem statement में, so then you will have to find the actual available time for the machine, and that time is denoted by TS, station time, या इसको service time भी कहते हैं. So station time और service time अगर आपने find करना है तो again it is a simple formula. You have to subtract this repositioning time from the actual available time, which is the TC. So आपका service time जो होगा, that will be the time available for each cycle for the worker to work on the product, or you can say the workpiece. So service time जो होगा, that will be TS. It will be equal to TC minus TR, and it will be
मैक्सिमम ऑफ ऑल द स्टेशंस। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूर ज़ाहिर है आपके पास एक वर्क स्टेशन तो नहीं होगा, यू विल हैव मल्टीपल वर्क स्टेशन। सो वट एवर इज़ द मैक्सिमम टाइम यू विल हैव टू टेक दैट पार्टिकुलर टाइम इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि मैंने बताया था आपका कि जो मैक्सिमम टाइम होगा दैट विल बी द desired cycle rate of the system. So TSI जो है it is service time of the desired station. So या station time of machine number 1 or 2 जो भी आपका होगा. So I can be from 1 to n, ठीक है ना. So that will decide the total number of workstations. So अगर for example 5 machines है तो you will have TS1, TS2, TS3, TS4, TS5. And if you want to find the repositioning efficiency, again output by input. So actual output जो आपको मिल रहा है in terms of time, that is the actual machining time after the repositioning, ठीक है ना. So it is TS. और जो theoretical आपके पास input था सिस्टम में, जो अवेलेबल टाइम है आपके पास, दैट इज़ द एक्चुअल साइकिल टाइम विच इज़ TC. सो repositioning efficiency इक्वल्स टू TS डिवाइडेड बाय TC, और TS जो है वो आपका TC माइनस TR है. सो सिंपली अगर repositioning टाइम्स गिवन हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, cycle times given हो, and if it is desired to find the repositioning efficiency, so you can use these two formulas, या TS by TC, या अगर सर्विस टाइम के बजाय साइकिल टाइम गिवन है तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना होगा. So the components of the cycle time normally, जो cycle time is the available time, so it will look like something, the parameters that are given in this graph. This graph basically shows different workstations. Station number 1 है, 2, 3, 4, 5 n stations हैं, ठीक है ना. So in each workstation there will be repositioning times, there will be actual machining times, and there might be idle times, ठीक है ना, जो waiting times है. Normally जो repositioning times है, we take that repositioning time on average basis, ठीक है ना. एक average value जो है वो ले लेते हैं, and we consider that this will be the time that will be used by all of the workstation. Practically it will be different, but this is one of the assumption that we normally take while designing the assembly or production system. So components of the cycle time at several workstations on a manual assembly line will be like this one. इसमें जो busiest workstation होगा, busiest workstation means यानी the workstation which will have the maximum operational time. So इस ग्राफ को अगर आप देखें तो स्टेशन 1 पे भी आपके पास आइडल टाइम है, यानी ये टाइम अवेलेबल होगा. फॉर दिस टाइम इट विल नॉट प्रोसेस एनीथिंग, है ना, बिकॉज इसका ऑपरेशनल टाइम जो है वो कम है. इसमें भी आपके पास आइडल टाइम्स हैं, ठीक है ना. सो दिस इज़ दैट आइडल टाइम. स्टेशन नंबर 3 को अगर आप देखें, सो देयर इज़ नो आइडल टाइम. दिस मीन्स दैट द ऑपरेशनल टाइम ऑफ दिस मशीन इज़ द largest one, and this will be the busiest workstation. So जो आपका busiest workstation होगा, this means that it will be the slowest workstation of the system. Slowest workstation means ये सबसे आखिर में जॉब जो है वो कंप्लीट करेगा. The slowest workstation or the busiest workstation is technically known as the bottleneck station.
and whatever is the time of the bottleneck station, that will be the theoretical cycle time of the system. So आपका cycle time जो होगा that will be exactly equal to the bottleneck station, है ना, और bottleneck station की जो utilization होगी that will be 100%, because जो cycle time होगा उसी time तक जो है वो busy रहेगा. So remember that in some of the problems, maybe instead of TC, it will be given that the bottleneck station time is, for example, 5 minutes. So अगर for example problem statement में है कि bottleneck station time जो है वो 5 minutes है, तो इसका मतलब है कि that 5 minute is the cycle time of the system. So you have to take care of these things. Line balancing problem में जो गिवन होगा that will be the total work content which will be consisting of many distinct work elements. ये दोनों का फ़र्क मैंने आपको बता दिया है कि work content या total work content means the total number of processes or total number of operations, and work element are the individual operations. तो अगर फॉर एग्जांपल एक मशीन है उस पर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो दिस मीन्स दैट देयर विल बी मैनी वर्क एलिमेंट्स दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय अ वर्क स्टेशन. सो गिवन डेटा में आपके पास टोटल वर्क कंटेंट टाइम होगा और जो इंडिविजुअल वर्क एलिमेंट टाइम्स है वो गिवन होंगे. The sequence will also be given. The sequence in which the elements can be performed, that is normally restricted. You have to follow that particular sequence while assigning the number of processes or the number of operations to any of the workstation. So अगर एक workstation को आपने workload assign करना है, you will have to keep the sequence of processes and operations in mind. So जो sequencing है या जो sequence है operation का, it is basically constraint that will be considered during a line balancing problem. And the line must operate at a certain cycle time, जो कि pace of the line कहलाती है. ठीक है ना. So वो certain pace जो होगा that will be the cycle time, and cycle time may be ये given हो. If it is not given, demand rate given होगी, उससे आपने फिर calculate करना होगा, या हो सकता है production rate given हो, उससे आपने calculate करनी होगी. There will be certain parameters available in the problem statement from which you will be able to calculate the cycle time of the system. या हो सकता है कि जो bottleneck station time है वो given हो, तो that will be your desired cycle time. And basically, what is the problem? Problem is that you will have to assign all those individual work elements, yani all those individual operations to the workstations in such a manner so that all the workers will get an equal amount of work that they will perform. Which again, I will say that practically it is impossible to have an even distribution of the workload among the workers because each and every operation will be different from some other operation, और उसका handling time different होगा, repositioning time जो है वो different होगा. Although we take that repositioning time as a constant value, but actually there will be slight differences among them, due to which you will not get a perfectly balanced line. So line losses जो है वो आपके पास आएंगी. The assumptions that we normally take in the line balancing algorithms is that we take the element times as constant values, but in practical they are variable. यानी जो लाइन लॉसेस का मैंने आपको कहा, जो रिपोजिशनिंग एफिशिएंसीज है उसका मैंने आपको बताया.
So they are different for each workstation. But for our ease, we take all those times as constant values. So this is one of the assumption that we normally do during the initial design of the system. और normally यही होता है कि initially you design some system on theoretically on some assumptions, and then you refine that design through different simulation softwares. ठीक है ना. तो उसके बाद फिर आप सिमुलेशन की तरफ जब आप जाते हैं, सो देन यू यूज़ द एक्चुअल वैल्यूज़. सो एटलीस्ट आपको इनिशियल डिज़ाइन से पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ वर्क स्टेशन होने चाहिए और क्या आपके डिज़ायर्ड टाइम्स होंगे. वर्क एलिमेंट टाइम जो है वो हम सिंपली ऐड अप कर देते हैं. The time to perform two or more operations in a sequence is the sum of individual element times. ठीक है. But additivity assumption can be violated due to the motion economies. यानी अगर फॉर एग्जांपल दो या तीन ऑपरेशंस आपने एक वर्क स्टेशन पे परफॉर्म करने हो, तो अगेन यू विल नीड some time to reposition the cutting tools, जो कि हम अवॉइड कर देते हैं. ठीक है ना. सो वर्क एलिमेंट टाइम जो है दे आर एडिटिव्स. ठीक है ना. उसमें हम सम अप करते हैं बट वी ओनली सम अप द एक्चुअल मशीनिंग टाइम्स. मशीनिंग टाइम्स के बीच में जो टूल टाइम्स है बाज़ औक़ात जो है वो हम स्किप कर देते हैं. ठीक है ना. सो दीज आर सम ऑफ द एजम्पशंस दैट नॉर्मली we take in initial design of the systems. वर्क एलिमेंट टाइम्स की जब आप बात करते हैं तो जल्दी जल्दी मैं ये आपको बता देता हूँ. टोटल वर्क कंटेंट टाइम एज आई सेड इज डिनोटेड बाय टी विद द प्रीफिक्स WC. सो टोटल वर्क कंटेंट टाइम मींस यानी जितने भी ऑपरेशंस होंगे उन सब टाइम्स को जब आप सम अप कर लेंगे, सो दैट विल गिव यू द टोटल वर्क कंटेंट टाइम. So total work content time basically equals to the summation of all the individual operations. K denotes a work element. So TE represent the element time and TWC represent the content time. Content time is collective time of all the operation, and TE is element time, meaning the individual operation time. So collective time, the work content time will be equal to summation of all the individual times. So TEK, K may be from 1 to n. That will depend upon the number of operations. For example, if there are 10 operations involved in some assembly, so K will be from 1 to 10. So you will then have to add TE1 plus TE2 plus TE3 up to TE10. So that will give you the total TWC. So TEK is the work element time for individual element K, whatever is that value. Work elements जो है normally they are assigned to, they will be assigned to some of the station. And stations are normally represented through the I prefix. So work elements will be assigned to station I that add up to the service time of the particular station, जो भी station होगा. So TSI means service time या machining time of station I. अगर 1 है तो TS1 होगा, अगर second machine है तो that will be TS2, similarly TS3, TS4. So सर्विस टाइम या स्टेशन टाइम अगर आपने फाइंड करना हो, so that will be equal to summation of all the TEK values in it. Element values means operation time of element E K, and but those operations which will be performed on this particular workstation which is TSI. अगर TS1 है तो this means that this will be TE1. ठीक है ना. So here K belongs to I. यहाँ पे आपका जो K था that belong to total number of
operations, यानी from 1 to n जितने भी आपने operation करने हैं. But here also we have that individual operations, but they are those operations which will be performed by this particular machine. So if the machining times are given instead of the operational times, so in that case, then you will have to take the sum up value of all those workstations. So the station service times must then add up to the total work content time, which is this one. सो अगर इंडिविजुअल टाइम्स गिवन है तो वो इस फार्मूले के थ्रू आप फिर वर्क कंटेंट टाइम फाइंड करेंगे. अगर स्टेशन टाइम्स गिवन है तो स्टेशन टाइम जो है वो फिर समेशन ऑफ ऑल दोज टी एस आईज, ठीक है ना. इन दैट केस आई विल बी इक्वल टू फ्रॉम 1 to n एंड दे विल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन. अगर फॉर एग्जांपल 6 वर्क स्टेशन है तो TS1 प्लस TS2 प्लस TS3 जो भी होगा, और TS1 प्लस TS2 जो है वो इस फार्मूले के थ्रू फिर आप फाइंड करेंगे कि अगर TS1 है तो TS1 पे कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल 2 ऑपरेशंस हैं तो TE1 प्लस TE12. Some of the constraints that you will take into consideration is, let me complete this slide. So different work elements will definitely require different times. So when elements are grouped into logical tasks, and then if you want to assign them to the workers, so the station service time TSI will definitely uh, be different for each of the workstation. They are not likely to be equal. तो जब आप मल्टीपल ऑपरेशंस को एक मशीन को असाइन करना चाहेंगे, सो ज़ाहिर है किसी वर्क स्टेशन पे 2 ऑपरेशंस होंगे, किसी वर्क स्टेशन पे 3 ऑपरेशंस होंगे. सो all of the workstations will have different station times. Simply because of the variation among the work element times, some workers will be assigned more work. डेफिनेटली जब डिफरेंट होंगे तो बाज़ वर्क स्टेशन के या बाज़ वर्कर के जो वर्कलोड होगा दैट विल बी लेस देन some of the other workers, and these variations among the work elements make it very difficult to obtain a perfect balanced solution. The constraints that you will keep in mind or that you will take into consideration are known as the precedence constraints. So this figure is known as precedence diagram. So या तो ये figure given होगी, otherwise data will be given to you, and from that data you will have to generate this precedence diagram. If you look into the precedence diagram, so they are represented through nodes and arrows, and there are some figures inside the nodes and outside the nodes as well. These nodes represents individual operations, and the number inside those nodes represent the operation number. So for example यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 12 nodes है. 12 nodes means there are 12 operations in this particular assembly scheme, या ये production scheme भी हो सकती है. That will depend on the system के किस system के लिए आपने precedence diagram जो है वो बनाया हुआ है. So if it is for assembly system, so this means that there are 12 assembly operations involved for the completion of this product, and the figure above the nodes, they are basically those times which you will be needing to complete those particular tasks or operation. So ऑपरेशन नंबर 1 का ऑपरेशन टाइम जो है वो 0.2
मिनट्स होगा या सेकंड्स होगा, जो भी होगा, तो वो वैल्यू आप देंगे, ठीक है ना। तो दिस मीन्स दैट अगर ये फॉर एग्जांपल मिनट्स में है तो 11th नंबर ऑपरेशन जो है उसका ऑपरेशन टाइम जो है वो 0.5 मिनट्स है। The arrows which basically joins these two these nodes, uh, this is the it shows basically the sequence of operations, uh, like ऑपरेशन नंबर 1 और ऑपरेशन नंबर 2 को अगर आप देखें तो दे आर बिफोर these two operations, there is no other operations which you can perform, you know. So यही आपका first और two है. So this means that if you do not have any uh, predecessor of any operation, यानी फॉर एग्जांपल 1 और 2 को अगर आप देखें इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, पोस्ट डिसेसर्स हैं लेकिन प्रीडिसेसर जो है इसका कोई नहीं है. So if there is no predecessor, it means that they are individual operations and you can start those operations at any time. Uh, because both in production scenario as well in uh, assembly scenario, there will be certain operations which you will not be able to perform before some of the other processes or operations. You know, simple example ये है कि for example अगर आपने एक threaded hole let us say generate करना है, if you have a metallic plate and you want to make a threaded hole in this plate, so there are two operations that are involved in that threaded hole process. पहले you will have to perform the drilling operation. ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू आपने होल ड्रिल करना होगा एंड देन थ्रू टेपिंग या किसी और टेक्निक के थ्रू जो है वो आप इंटरनल थ्रेड्स उसमें जनरेट करेंगे. सो बेसिकली देयर आर टू ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. और उसमें जो पहला ऑपरेशन है ड्रिलिंग, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, और जो थ्रेड कटिंग ऑपरेशन है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑपरेशन, बिकॉज you cannot perform the thread cutting process first. थ्रेड कटिंग का ऑपरेशन जो है वो टोटली डिपेंडेंट है ड्रिलिंग प्रोसेस पे. सो वंस यू हैव अ होल देन यू विल बी एबल टू जनरेट थ्रेड्स इन दैट होल. सो ये वो प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट है, ये वो सीक्वेंस है जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करती है. सो यू विल हैव सर्टेन ऑपरेशंस दैट विल रिस्ट्रिक्ट यू and you will not be able to assign those operations to the workstation initially, you know. So इस precedence diagram को अगर आप देखते हैं तो we have two operations 1 and 2 which are independent operations and we can assign those to any of the workstation, you know. So आप ये दोनों operation जो है simultaneously भी start कर सकते हैं because they are independent, you know. हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आप थर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं तो यू कैनॉट असाइन दिस ऑपरेशन टू अ वर्क स्टेशन बिफोर द फर्स्ट वन. सो अगर आपने फर्स्ट ऑपरेशन जो है ये ऑपरेशन असाइन नहीं किया किसी मशीन को तो आप ये असाइन नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर आपने 4 असाइन करना हो तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट की हो तो तभी आप फोर्थ असाइनमेंट जो है वो या फोर्थ ऑपरेशन जो है वो असाइन कर सकते हैं किसी वर्क स्टेशन को. सो ये आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं एंड दीज कंस्ट्रेंट्स आर नोन एज प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट्स. सो यू विल हैव टू कीप दीज प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट्स इन माइंड व्हेन यू विल असाइन द operations to the workstations. So लाइन बैलेंसिंग को अगर आप समराइज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइन बैलेंसिंग इज़ नॉर्मली टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल वर्कलोड among the workers as evenly as possible. आपका एम जो है ऑब्जेक्टिव हमारा यही होगा कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन फिर भी परफेक्ट बैलेंस जो है वो आपके पास नहीं आएगी एंड ड्यू टू the variations in the times. When the workstation times are unequal, or ज़ाहिर है they will be unequal
in actual scenario. So if the workstation times are not equal, this means that the slowest workstation will determine the overall production rate of that particular system. ठीक है ना. स्लोएस्ट वर्कस्टेशन मैंने आपको बताया था कि इट विल बी द बिजिएस्ट वर्कस्टेशन, और जो बिजिएस्ट वर्कस्टेशन होगा that will be denoted as the bottleneck station. And whatever is the time of the bottleneck station or the slowest workstation, that will be the theoretical cycle time of the system. And the whole production rate will be dependent on that particular time. Work elements जो है normally they will be assigned to the workstations such that the assembly cost is minimized. दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं, यही ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे कि आपकी असेंबली कॉस्ट जो है वो कम से कम हो. इफ़ यू reduce the idle times, this means that you are reducing the assembly costs. So दो assembly cost की जब आप बात करते हैं तो you have the labor cost and the idle time cost. So labor cost can be reduced if you properly design the system and if you properly calculate the total number of workstation. अगर आपके वर्क स्टेशन ज़्यादा होंगे, so this means that the workers will be more and labor cost will be more. So we try to come up with a optimal value as far as the total number of workers are concerned, and we try to reduce the idle times. Idle time के जो कॉस्ट आते हैं तो वो आपके डेफिनेटली फिर कम होंगे. सो इनको अगर आप देखें तो जो हमारा मेन फोकस है, दिस इज़ मिनिमाइजेशन ऑफ द आइडल टाइम. और जो हमारे लिमिट्स हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, दे आर द प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स. एंड व्हाट आर द प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स? इट इज़ दैट सीक्वेंस which comes from the precedence diagram. So you will be assigning basically the operations with the constraints that are available in the process plane. Concept जो है लाइन बैलेंसिंग का यही है कि फर्स्ट यू विल separate the total work content into minimal rational work element. वर्क एलिमेंट मैंने आपको बता दिया है, वर्क कंटेंट भी मैंने आपको बता दिया है. सो इनिशियली यू विल हैव number of total number of operations. So you will have to individually identify each and every operation कि कितने ऑपरेशन है, and afterwards you will assign those operations to the workers or workstations. So separation of the total work content into work element is your first task, and then keeping the precedence constraints in mind, which must be satisfied, you will have to distribute those work elements to the machines. So based on these concepts, we normally find the performance measures of the assembly lines or production lines to come up with a balanced solutions. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. मिनिमल रैशनल वर्क एलिमेंट या सिंपली वर्क एलिमेंट जिसे आप कहते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट फिजिबल डिवीजन ऑफ द वर्क. Smallest feasible division of work means that it is the smallest element into which you can usefully divide a operation, meaning that you cannot be that operation cannot be subdivided further. वही एग्जांपल जो मैंने आपको दी कि फॉर एग्जांपल थ्रेडेड होल आपने जनरेट करना है. सो थ्रेडेड होल इज a process in which there are two operations. You have to perform the drilling operation first and then thread cutting operations. So there are two work elements involved in that particular process. One work element is the drilling, second work element is the thread cutting operation. अब अगर आप ड्रिलिंग को देखें
So drilling operation cannot be subdivided further because it is a single operation. So drilling is considered as a work element, or you can say it is a rational work element. Thread cutting is a work element or rational work element. ठीक है ना? So examples में यही है कि drilling a hole is a work element. Yeah, for example, if you have, let us say, two parts, two components, and you want to fasten or join these two components with the help of a nut and a bolt. So again, it is a single operation. You will have two work pieces, and simply you will have to join these two work pieces with the help of a nut and bolt. So ये एक ही ऑपरेशन है, इसको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते किसी दूसरे ऑपरेशन में. So an independent individual operation will be considered as a rational work element या minimal rational work या simply work element उसे हम कहते हैं. And total work content, uh, as I told you so many times, that it is sum of the all the work that will be done on the assembly line or production line. So it is summation of those work element basically. यानी जितने भी operations हैं उन सबको जब आप sum up करते हैं तो you get the total work content. और in terms of times अगर आप इसको calculate करते हैं कि individual work element का time कितना है, so that is represented by TEK. और अगर total work content का time आपने find करना है, so that is represented by TWC. So work content time will be equal to summation of all the TEK values. Workstation process time को हम TSI के through represent करते हैं, ठीक है ना. So it is just the summarized form of the slides that we had discussed. So sum of the work elements done at station I. So TSI will be summation of all the TEK values, but those operations which will be assigned to some specific workstation. Cycle time TC से आप डिनोट करते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट वर्क स्टेशन टाइम, जो बिजिएस्ट वर्क स्टेशन मैंने आपको बताया, या बॉटल नेक वर्क स्टेशन. एंड थ्योरेटिकली cycle time is the time interval between parts that will come off the line. Or in other words, you can say that it is the time to produce one product. और ये आपने ध्यान में रखना होगा कि TS जो है, यानी जो एक्चुअल मशीनिंग टाइम है, if the repositioning times are given, TR अगर given हो, तो TS should always be less than TC. प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी असेंबली ऑपरेशंस हैं विच मस्ट बी परफॉर्म इन सम प्रॉपर सीक्वेंस. जो प्रेसिडेंस डायग्राम में है ना, मैंने आपको प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट्स की बात की. सो सीक्वेंस जो है वो डिफाइन होगा, एंड देयर विल बी certain operations that you will not be able to perform before some of the operations. Example is the same that I have already given to you, creating a threaded hole. So you must drill a hole first, and then you will perform the taping operation. They are known as precedence constraints. So precedence constraints are basically the restrictions of the sequence in which the job must be. ये वो प्रेसिडेंस डायग्राम है जो मैंने आपको बताया. इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स. नोड्स जो है दे रिप्रेजेंट द वर्क एलिमेंट. एरोज जो है वो सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है, यानी वो ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है जिस ऑर्डर में आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे. सो इट इज़ अ नेटवर्क दैट शोज द ऑर्डर ऑफ द टास्क्स एंड देयर रिस्ट्रिक्शंस. इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द वर्क एलिमेंट्स. So this is a solved example from the Gruer book, example 15.1, and we will do this example inshallah in the next video. Thank you.